नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका अनलॉकडाउन 1.0? वैसे आपने कल जो मैंने सिखाया था उसकी प्रैक्टिस शुरू की कि नहीं? क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो तो ताड़ासन और वृक्षासन में आपके ऑलरेडी 5 मिनट्स इन्वेस्ट हो ही चुके हैं। सो टुडे आई विल शो यू 2 फर्दर आसन्स जिससे कि आप 5 और मिनट आपके योगा प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हो और कल से यू विल हैव अ फुल 10 मिनट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस। ऑल राइट। और कल का फिलोसफी ऑल्सो अन्नम न निंदयाद तद्व्रतम। सो हैव यू gotten that into your mind? No more looking at food as protein, carbohydrate, fat. No more saying ऐसा बना है, वैसा बना है, मुझे ऐसा चाहिए, मैं वैसा नहीं खाती हूँ, ठंडा है, बहुत गर्म है. None of that. Be grateful for what's on your plate. And now for today's practice. So आज का प्रैक्टिस में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज के प्रैक्टिस में again you're going to need a mat. ऐसे मैट नहीं है तो टेंशन मत लेना, ठीक है? ताड़ासन से ही चालू करो। ऑल राइट। एंड नाउ यू ऑल नो कि ताड़ासन कैसे होता है। सो ओपन योर फीट, स्प्रेड देम इन द फ्रंट। ऑल राइट। तो फीट को स्प्रेड करो। देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे तो मेरे हर एक टो के बीच में से मुझे मेरे मैट का ब्लैक कलर दिख रहा है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी एबल टू सी इट. And your heels behind, feet together, knees lifted up. You remember what I had told you about your hips? So hips together. So hips ऐसे नहीं, ऐसे. Okay? So together, hips together, chest lifted, palms to the side. तो आज हम क्या करेंगे? Today what we will be doing is that we will be raising our palms, bringing them towards our chest, slightly bending in our knees. And if while you are bending in your knees, if you hear a sound, then it means that you need more yoga practice. Okay? So bending in your knees and then jumping and spreading your feet apart. जब आप आपके feet apart करोगे तब आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड मत करो और बहुत कम भी स्प्रेड मत करो. इसको about 3 to 3.5 feet आपको स्प्रेड करना है, which is like an ideal distance for most of us. अगर आपके घुटनों में दर्द है, बैक में दर्द है, तो जंप करके मत स्प्रेड करो. इस पोजीशन से सिंपली गो ऑन टू द साइड. इस आसन का नाम है त्रिकोणासन. ठीक है, मैं आपको त्रिकोणासन सिखा रही हूँ और मुझे और भी कोई सिखा रहा है. राइट. सो इसको फीट आपके स्प्रेड करो, आर्म्स लिफ्ट करो. अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि इनवेरिएबली जब हम हमारे फीट साइड में स्प्रेड करते हैं तो हम हमारे हिप्स पीछे के तरफ लेके जाते हैं, यू नो. पर ताड़ासन में हम ऐसे नहीं खड़े रहते, ऐसे हम सीधे खड़े रहते हैं. तो अभी हमको यहाँ से क्या करना है? सीधा खड़ा रहना है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज ब्रिंग योर हिप्स टू द फ्रंट. हिप्स को फ्रंट में लेके आइए, हिप्स को स्क्वीज कीजिए, फीट को जमीन पर एकदम पिलर्स के तरह रखिए. अभी योगा में जो है इसमें 2 टाइप की एक्शंस होती है. यू कॉन्स्टेंटली यूज ऑपोजिंग फोर्सेस सो दैट यू बिल्ड अ मोर स्टेबल फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ. तो ये इनर थाइज जो है, यू हैव टू टेक योर इनर थाइज अवे फ्रॉम ईच अदर, inner thighs away from each other, and from the outer thigh you have to work at gripping your inner thighs. समझ गए आप? आपको यू नो बहुत लोग बोलते हैं मुझे सेल्यूलाइट है, मैं क्या करूं? तो मैं अभी आपको बता रही हूं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि जब आप शॉर्ट्स पहनो तो आपका सेल्यूलाइट ना दिखे. स्मूथ अपीयरेंस ऑफ द थाई शुड अपीयर. सो हाउ विल दैट कम थ्रू? पुश योर इनर थाइज अवे फ्रॉम ईच अदर. Push the outer thigh towards your inner thigh so that the leg is strong like a rock. Squeeze your glutes together. Lift your chest up. Stand up and tall. You remember, for all those of you who've been watching my videos, I told you that you have to lift your chest like someone is lifting you from under your chest. जैसे हम लोग बच्चों को उठाते हैं उनके आर्मपिट के अंदर अपना हैंड डाल के. तो like that you need to stand tall. Remember, don't let the hips fly at the back. Hips towards the front and these inner thighs towards the back. Hips towards the front, inner thighs towards the back, inner thighs pushing away from each other.
outer thighs pushing towards your inner thighs, knees lifted up, chest tall and open. This is what you have to learn to stay in. इसका आपको practice करना चाहिए. There is a chance कि आपका outer thigh में cramp आए, in which case release and go back into that asana again. Vrikshasana में we bent on our toes and we turned our foot in when we were going on the right side. We are now going to do the opposite. We are going to lift our toes and rotate our ankle and then place that right foot down. Remember again, right foot maybe all my toes are visible. The black is visible from between all of my toes. That's what you need to work at doing. Left foot को थोड़ा सा right foot के तरफ लेके आओ. लेकिन ये जो आपने create किया है, inner thigh going in, hips coming to the front. Inner thigh staying away from each other, but outer thigh staying together. इसको मत छोड़ना. And stay. Now what do you need to do in Trikonasana? What you're going to be doing is going towards the right side without losing what you have created in your legs. So go towards the right side as if आपको कोई खींच रहा है वहाँ से. So go towards the right side and then work at placing your hand down. Oops. Work at placing your hand down and stay. This where your chest is rotating so that the chest is completely visible from the front, the back of your leg, the back of your hip, the back of your chest, all from the behind will be in one straight line. Arm is up and then you stay like this. If you can't go down, stay here, okay? You can stay on your thigh, you can stay on your knee, you can stay on your shin, you can stay on your ankle, you can even my yoga series should be called featuring the green chair, okay? ये साइड पे करती हूँ, इस साइड को लगेगा भूल गई मेरे बारे में that I exist, okay? So up, tall, yeah, all right. If you can't go down, go on the chair, but remember that as you go, your hip, left hip comes to the front, right hip goes to the back, chest turns fully, and you're able to look up towards the ceiling. You don't need to look up towards the ceiling, you can look straight ahead, but once you're done from there, come up. All right, this is Trikonasana. इसके प्रैक्टिस के बहुत सारे बेनिफिट्स है. A lot of you have been asking, I have back pain, I have sciatica, I have acidity, I have bloating, what can I do? This is one of the main asanas for acidity, bloating, constipation, sugar cravings. All right, the second asana for today. खड़े खड़े हम लोग कर रहे हैं, लगता बहुत आसान है, लेकिन if you learn to do this properly, तो और मुश्किल आसन भी आपको आसानी से आ जाएंगे. पार्श्वकोणासन. What should you be doing? Same thing. Stand, okay, and then go on the side, or remember, inner thighs out, outer thighs in, hips to the front, chest raised, chest up like someone's carrying you. Now, foot on the ankle, anchor on your, and turn, then place the toes in. Don't lose what you have created on the left leg. Now slowly work at bending on your right side. Now when you're bending on your right side, you want the hamstring or the back thigh to move towards the front, and you want the quad to move towards the back. So hamstring आगे जाएगा, quadricep पीछे आएगा. Then you one more time do the same thing. Go, and go down and stay. Same thing. Work at turning your chest. Turn your chest so that you're up and stay up. Okay? Do it on the other side. Chest towards the front. Lift it up. And you want to go down, 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 down. So hamstring से आगे जाओ. Quadricep से पीछे आओ.
turn that foot a little towards the left side, and then go down and stay. All right, stay for as long as you're comfortable. Then you come back in the asana, and you're done for day 2. But you'll be done for day 2 when you do day 1 first and then do day 2. Just a 10-minute quick practice, but good for everything. All right, so what's the philosophy then? The philosophy is the second philosophy, which goes annam na parichakshita tadvratam. So what's the second vow? The second vow is never refuse food. Comes from the very first word, अन्नम न निंदयात. So जब आप किसी के घर जाते हो और आपको कोई भी कुछ ऑफर करता है, never say no. Take a little bit, because then when you share with them, they also feel like you are a part of them, you're part of their friends, part of their family. Also, whenever anyone comes to your house, make sure that you're offering them something. इसीलिए हमारे यहाँ पर अगर कोई आए और आपने उनको पानी तक नहीं पूछा, then they feel insulted. Where does that come from? It comes from the Upanishad teaching, annam na parichakshita. The belief is कि अन्न पानी में भी है. So water is also considered to be anna. Fire is also considered to be anna. And water and fire are considered to be interdependent on each other. Just like in the first one, Sharir and Pran are interdependent on each other, but the relationship or the harmony between them is brought about by Anna. Out here, Anna na parichakshita, because Anna is also water, Anna is also fire. Both are interdependent on each other, and this interdependency is brought about by Anna. What does that mean? What that means in real life is that अगर आपने टाइम पर नहीं खाया, so then you start getting too much worked up, okay, angry, irritated, fired up, and your calmness which comes with water kind of goes away. इसलिए जब हमारे फूड में लंबे लंबे गैप्स होते हैं, तो अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है, बिकॉज उसको भूख सही नहीं जाती. अगर टीनेजर होता है तो वो क्रैंकी होता है क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट. अगर कोई अडल्ट होता है तो देन दे गेट कॉन्स्टिपेटेड. सो रिमेंबर, नेवर रिफ्यूज फूड. जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, they have always shared food and offered food, always shared water, offered water. So remember that, follow that, and only then is your yoga practice going to truly have the benefits of emotional and spiritual upliftment also. Otherwise it will only get limited to having a thin body. But yoga is much more ambitious in its approach. So let's receive it in its totality. Thank you very much for watching, and keep up with your practice. I'll see you tomorrow.